Good evening, everyone. Good evening, Darshana. Hello. Good Good evening, evening. Nanda, Good Sangeeta. evening, ma'am. Happy to see you all back. Yes, we missed you in so many sessions. Same here. I miss you all a lot. I really know I can't express my feelings, but Good, you're back today. So today we have a last session, but it is going to be amazing. I know, and looking forward for everyone to log in today. Hi, Monica. Hi, Sunanda. How are you? I'm doing good, Monica. Good. मैम कल आपने कहा था 3 क्लासेस होंगी आज लास्ट नहीं, we will continue, but इस book की 3 है, इस book की last है आज, but we'll be talking about billionaire mindset and money के ऊपर जो mastering है, वो next 2 days we'll be taking. हाँ जी हाँ, ओके that we'll be taking, and the new batch is going to start from Monday onwards. ओके We can join, Didi. Oh yes, you're most welcome. Bring more Okay. friends, you know. Good evening, Dr. JP. Good evening, Monica ji. Good evening. Good to see you. You're Thank back you. from office? Yes. Great. Good evening, Lalita. Lalita is there. Sangeeta is there. Sangeeta, how are you? Good to see you over here. How can we miss? Yesterday you went early. We were talking to you and you went early. It's me. Good evening, Shilpa. Hi, good evening. थैंक यू Thank you Very so busy. much. Yes. Yes, it's my birthday today. Oh, Wow. many happy returns of the day. Yay! Thank you. Thank you so Happy much. birthday. Happy birthday. That is why there is a new, it's Happy a new birthday, version Shilpa. of yours I can see on your face. Yes. So blessed to have a birthday today. Oh, yes. What Wow. beautiful birthday I had today. Oh, All many cool. good. So what did you do since morning? Since yesterday night only, I got a birthday gift from my husband. मेरी बेटी ने कार्ड बना के My दिया. God. Wow. Very nice. Very nice. Yeah, and today my mother-in-law made the chole bhature for my birthday. 2 केक बनाई है आज, तो आज special, Wonderful. बहुत special है मेरा birthday. Awesome. That's cool. You That's are very blessed. nice. See the magical Yeah. environment that is being created. Yeah, I feel so blessed. आज मुझे बहुत special feel हो रहा है कि wow. Very nice. Very I nice. owed this birthday to you, Monica ji. Thank you. You used to own it yourself, because you created that magic at home, Wonderful. Yeah. Good to Thank see. you. Thank you. Many happy returns of the day. May God bless you. Thank you so And much. Love create you that so much. magic every time, not only on birthday, but every time, every moment, Yes, certainly. Thank you. Thank you, all of you. Thank you, Monica ji. Vikram, welcome. You are traveling somewhere, I believe. गुड इवनिंग मैम. Good evening. You're in car and you're traveling. अभी जी मैम जी. Everything is fine at home? पर आपको हमारा तो मैम जो मंथली रूटीन है उसके लिए जा रहा हूँ मैं. Okay, got it. Not a problem. That's okay. So Thank good to see your commitment that you are here. Yeah, And thank you all the members that you are here for this session. Yeah. I really welcome you to the session. Yeah. Who all are there? Anybody is left? I want to say something. Yeah, please. Shweta, welcome. So I stay in this. I've spent all my life in South India, between Karnataka and Telangana, which was a part of Andhra Pradesh. It's split and now it's Telangana. So I spent all my life in these two areas, regions. So मुझे अभी आपके ग्रुप के साथ में कनेक्ट होके मैं इतने दिन से छोला भटूरा ये वो सुन रही हूँ. छोला भटूरा मेरे कान इडली डोसा सुन के पक गए थे. छोले भटूरे सुन के कितना अच्छा लगता है. कितना अच्छा लग रहा है कि ये सुन के छोले भटूरे दाल मखनी और क्या
कहते हैं कौन से का नान होते हैं, तंदूरी नान, लखनवी नान. नहीं तो यहाँ के लोगों से बात करो, they just talk about idli dosa. I know, yes. And when we love idli dosa, when we talk about idli we're running dosa, for this. we are Yes. We love idli dosa, appe, masala dosa, cut dosa. I have every day in office. Welcome, Rupali. Great to see you all here. So I just welcome Swati, Shweta, welcome. Hello, ma'am. Welcome. Good evening, ma'am. Rupali, Lalita. Welcome. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Lalita. Good evening, ma'am. Good evening. Good to see you here, all of you. Today is the last. Ma'am, you are looking so beautiful today. Fresh. Oh, thank you. Yes, you are very much elegant today. And after a long time, I am attending your session. आज लास्ट डे है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा सज के आई हूँ मैं. Waiting for your new session also again. Yes, it is starting on Monday, and looking forward for more participants, you know. And I really request each one of you, you know, as you have created magic in your lives, so please spread a word and bring magic into people's life also. That is what mission is ours, you know. So we have to. Sure. Thank you so much. So I'll be sharing one link. Give them that link. Let them join. Let us start from Monday onwards with full swings, you know. Again, new magic people. And you are all Monica? most welcome. Monica, as I have joined on the 27th day, it's not completed my course, so it's a chargeable or what's there actually? No, there is no charge, darling. There is no charge. Okay. This is a service that we are providing. We really want to make everybody happy. That is the main aim. That's actually great. You're doing great. So that is why. So you join from Monday onwards, because I'm looking forward that you should continue with this, because the journey from first day is very, very important. Very yes. So I don't say you come, you take the value, but please join from the new session also. That will give you more value. Right now, I'm just feeling like this. Still, I'll be alive. Will be in touch with you. This everything. You're most welcome, and please join the group from Monday onwards as well. Today I'll be sharing the link. So I would love that everybody should join. And इसमें से भी बहुत लोगों ने पहले ही booking करा दिया कि हम होंगे. Yes, ma'am. Thank you. Ma'am, it will be the same group now. Everything will be shared in the same group. Yeah. I am going to give you a new link for those groups. Okay. हमारे ये वाले ग्रुप का थोड़ा 3 दिन की क्लोजर है हमारी कमिटमेंट के साथ. So they want more sessions on billionaire mindset. So I'll be taking 3 more sessions in this group. Magic का आज last date है, but mastering the billionaire mind and all that stuff is tomorrow, day after tomorrow, and then Sunday. That will be taken. Okay. So that is all. Wow, great content. Thank you. Yes. So this is the demand of my members. So I am ready to go ahead with it, and I love being with you people. So I love sharing with everybody. So that is what I'm here for. Great. So we can start the session. Who's going to read today? Good evening. I will read. Right. So who will read? Shilpa. Yeah, Shilpa. Come on. Wow. Shilpa का birthday भी है और yes, special birthday gift. Special birthday. Wow. Happy birthday, Shilpa. Happy birthday. Thank you You so should have seen her. much. She's glowing like anything. She's looking so beautiful. So beautiful. My God. So we are wishing Shilpa, you will be billionaire in 3 days only. You will be getting something else also. Big party from my. She has already. I'll give a big Her party. magical birthday yesterday started from last. Yesterday's 12 o'clock. So it has already started. Today, the whole day she's celebrating. Now she's celebrating with us, with the magic. Wow. Yes, my magic family. Yes, remember the magic. Yeah, come. Day 28, remember the magic. That's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you.
Yeah. Stars deal in. That's the thing with magic. Magic is always there. पहले भी था, आज भी है और आगे भी होगा. But आपको देखने की जरूरत है वो कहाँ है. And only you can create it, nobody else. Invisible है, but आपके पास है. सब कुछ आपके पास है. उसका control आपके पास है. Right. Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. Oh, we are So when 28. We you have to do 29. remember, Sorry, today is 29th day. This is a magical future. Sorry, that is my mistake. It is 29th day, so it has to be your magical future. मैंने कहा ये तो कल हमने किया था. Yes. okay, day 29, your magical future. You are builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more flowers to the building of your life. Yeah. So you are the builder of your life. मतलब आप ही builder हो, आपने ही foundation बनानी है. And using the gratitude, you have to create the different floors. तो आपने अपनी incredible life के लिए एक foundation बनाई है और उसके ऊपर जो आप floor लगाओगे वो magic tools को लेके लगाओगे. The magical practices that is being shown to you. So you will be using those practices and you will be putting different floors on it. Yeah. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. Yeah. There is so no you will end. be flying higher and higher and until you touch the stars. Stars का मतलब होता है वो एक ऐसा टाइम आएगा आप मुंह से बोलोगे और वो चीज सामने होगी. मुंह से चीज बोलोगे और वो सामने होगी और कुछ झूठ नहीं है. That is a fact. The more you will, ingrain the magic practices, the more you use the tools, you will see the way. आप जब ऐसे सांस लेते हो ना, ऐसे साथ के साथ आप शुक्राना करते रहोगे and the things will be coming to your life. It will be attracted to your life. Yeah. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there is no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. Yeah, it is infinite. कोई end नहीं है, कोई इसको मतलब कोई नाप तोल नहीं कर सकता, कोई height नहीं है, कोई बस वो है, उसको experience करो and it is infinite और abundance में है. ये abundance में कहीं कोई कमी नहीं. अगर आप सोचोगे कि मैं अभी पीछे अनमोल से मेरी बात हुई थी तो अनमोल मुझे कह रहा था अगर मैं abundance मानूंगा ना तो किसी का पैसा मेरे पास आ जाएगा तो मैं इतना नहीं मांगता, मैं इतना ही मांगता हूँ. ऐसा कुछ नहीं है. Universe is infinite. As much as you want, you can get it. अपने mind में बस आपको सिर्फ बोलना है. You have to ask for it, and you need to have a reason for it. Why? How? नहीं सोचना. Right. To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. Now see, John S. A. Gardner. Yeah, 3 things. When you speak, तो courteous हो गया. जब आपने enact किया यानी कोई action किया तो वो generous और noble हो गया किसी के लिए. और जब आप उसको जीते हो तो वो एक तरह से आप एक जन्नत की जिंदगी जी रहे हो. So आप ये देखो जो आप initial starting level पे करोगे, जब आप सिर्फ बोलना शुरू करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है और कुछ अच्छी अच्छी छोटी छोटी चीजें होनी शुरू हो जाती है. और जब आप कुछ एक्शन होता है और एक्शन से आप उसको जवाब देते हो और तब यू बिकम जेनरस, देन यू बिकम नोबल. और जब आप लिव का मतलब है हर सांस में शुक्राना. When you take air, thank you so much. When you are getting up, sitting, you are sitting, whatever you are doing, every moment you are just saying thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. तो वो आपकी जिंदगी जन्नत बन जाती है. मतलब आप जो बोलोगे वो सामने हो. Yes. The ideal way to move forward from here is to
Maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. Yeah. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it. And the more deeply you feel it, the less time you will need to give to it as a guide. 3 days a week the of more remember. practice you will do, the more you will go deeper. मतलब आप जितना ग्रेटिट्यूड करते हो, अभी जैसे हम बोलते हैं, सिर्फ बोल दें, उसके बाद उसने एक चैप्टर आया था जो हार्ट पे हाथ रख के बोला था कि दिल से बोलो, देन उस इंटेंशन से बोलो. जब आपकी वो इंटेंशन के साथ जब आपकी प्रैक्टिस होती जाती है, दैट यू बिकम डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर, देन आपको किसी चीज बहुत कम टाइम में आप सब कुछ अचीव कर सकते हो जो भी आप चाहते हो. यस. 3 days a week of remember the magic, or combining it with 2 other magical practices of your choosing, should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to do remember the magic on one day, magical relationship on the second, and the magic money on the third. Because there are 28 chapters. अब 28 chapters को अगर आप practice करना, सारा कुछ तो एक दिन पे practice आप नहीं कर सकते. So what you can divide it, you know. एक दिन आपने magical day, जो magic है पूरा दिन कैसे होगा वो practice कर लो. एक दिन relationships पे कर लो, एक दिन money पे कर लो. It is up to you, but keep on doing it. Don't stop it. तो वो उस हिसाब से आपको बहुत easy हो जाएगा हर chapter को incorporate. Yes. 4 days a week of remember the magic, or incorporating it with 3 other magical practices of your choosing, will maintain your gratitude and accelerate the magic. Yeah. 5 days a week of remember the magic, or incorporating it with 4 other magical practices of your choosing, will dramatically increase your happiness and magic in every area and circumstances of your life. 6 or 7 days a week of remember the magic, or incorporating it with any other magical practices of your choosing, and you will become the true alchemist who can turn everything into gold. Now he is giving you the comparison. अगर आप हफ्ते में 3 दिन करते हो तो उसका क्या impact होगा, 4 दिन करते हो तो क्या होगा, 5 दिन करते हो तो क्या होगा, 6-7 दिन करते हो तो क्या होगा. तो I would highly recommend do it for 6-7 days. क्यों, हम जब इतनी अच्छी जिंदगी हमें मिल सकती है, why not to grab it and why not to live it accordingly. So I would say do it all 7 days. Yes. अब कुछ recommendations बता रहा है कि आपने कब कब कैसी practice करनी है. Magic practice recommendations. To keep the magic continuing in the important areas of your life, like your happiness, health, relationships, career, money, and the material things you owe, you could do the specific practices for each area once a week. However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more through an increased practice of gratitude for that area several days a week. If you are unwell, you will want to do magical practices for your health every day, if not multiple times in a day. The following recommendations will easily guide you towards the magical practices that will have the strongest and the fastest effect in that area. Follow the recommendations in the relevant area for 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. आपके कितने सारे टॉपिक्स के ऊपर है, आपको उसके हिसाब से करना है. सपोज अब आप जितने लोग भी यहाँ पे हैं, किन्होंने they have found a magical change in their relationships. How many of you? I have. Okay. Who else? I have. I'm having it. I think most of us I feel results in yes. relationships. Most of us, because relationships में बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा. And how many of you used magic dust? I use magic dust.
यस, मैजिक डस्ट इज लाइक किसी के साथ कभी भी यूज कर लो. मैं तो अपने पे भी यूज कर लेती हूँ. You can use magic dust on yourself also. If any of the organ is paining, just put a magic dust over there and then you see the things will vanish. The pain will vanish. And, Yes, I do. And magic wand. I have used it. Hello, ma'am. You're looking very smart today. Oh, thank you. अरे अच्छा. बहुत smart लगी रही होगी फिर तो मैं. Okay. So magic wand, very good. I also use that. Yes. Magic mirror. Do you remember me? Ma'am, using it, trial. I use We it are daily. doing it every day. Wonderful. So, see, आपके face आपका बताता रहेगा कि आप magic mirror use कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. Your face will tell you. Then magical health. संगीता कर रही होगी. Ma'am, help. Yes, I am doing magic health. Whenever I मतलब not regular जब feel होता है कि जरूरत है तो then we start doing it. Very very good. Magical air that we breathe, ये तो नो मेरे ख्याल से सभी लोग कर रहे होंगे because air is. हाँ, ये तो कर रहे हैं. हाँ. Magic money. Yes. यार बैठे यहाँ पे मनी. सबसे पहले बोली सुजाता मैं. Money magnet, money check, magic check. And ma'am, it's working also. It's working also. Because that's the beauty of it. It's working. Oh, very very good. And magic test हो गया. Works like magic. अपने job में किसी ने. I do gratitude every day for my work. Yes. वो इनविजिबल मैनेजर का थोड़ा सा रह जाता है, वो एकदम स्ट्राइक नहीं होता है. But I do gratitude every day. One entry is for that. Great. Thank you for my wonderful job. So basically, what they have said is when you have a concern about money, you must read these chapters: magic money, money magnet, magic check, magic wand, magic mirror, and remember the magic. तो ये मनी एरियाज के अंदर ये 4-5 चैप्टर्स है जो पढ़ने बहुत जरूरी है. करियर के लिए चाहिए, उसके लिए वर्क लाइक मैजिक, मैजिक डस्ट, मैजिक वैंड, मैजिक मिरर और रिमेम्बर द मैजिक. इसमें 4 तो ऐसे हैं जो कि सब में जरूरी हैं, जिसमें सब में आ सकते हैं. मतलब ये है. मोनिका, मुझे एक डाउट है. हाँ जी. ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है, फॉलो द रिकमेंडेशंस इन द रेलेवेंट एरिया फॉर 3 weeks मिनिमम. Doing each recommended practice once a week. मतलब मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया ये. देखो वो तो अपनी तरफ से ये कह रहा है. देखो आपका जिस एरिया में, देखो अब उसने पूरा चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए, 28 चैप्टर्स हो गए. ठीक है. नाउ अगर कोई एक स्पेसिफिक एरिया में आपकी कोई प्रॉब्लम है, सपोज रिलेशनशिप है, तो वो सारे चैप्टर्स बता रहे हैं कि ये सारे चैप्टर्स आपके चलेंगे. तो आप एक एक चैप्टर एक दिन लेके चलो और उसका असाइनमेंट करते रहो. अच्छा. अब जैसे तुम्हारी डिजायर्स है, डिजायर्स के लिए मैजिक डस्ट, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, ये डिफरेंट चैप्टर्स के नाम है. हाँ ठीक है. तो आप एक चैप्टर पढ़ोगे, उसके असाइनमेंट करोगे, अगले दिन एक चैप्टर पढ़ोगे, उसके असाइनमेंट करोगे, अगले दिन चैप्टर पढ़ोगे, उसके असाइनमेंट करोगे. ठीक है. तो एक ही बार आएगी ना एक चीज. अब उससे पहले देखो स्टार्टिंग देखो, रिलेशनशिप्स में ये रिकमेंडेशन है. रिलेशनशिप्स के अंदर मैजिकल रिलेशनशिप चैप्टर, magic dust everyone, magically heal your relationships, the magic and magic mirror, remember the magic. 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स दिए हैं. आप एक चैप्टर पढ़ोगे, असाइनमेंट तो 1 वीक हो गया ना. हाँ बस वही है. तो ये क्या मतलब है फिर? फॉलो द रिकमेंडेशंस इन द रेलेवेंट एरिया फॉर 3 weeks मिनिमम. वो नहीं समझ में आया. अगले 3 हफ्ते तक आप ये करो तो आपका उस प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा कंप्लीटली, जड़ से खत्म हो जाएगा अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो. अच्छा. उस एरिया में 3 हफ्ते तक करते जाओ. हाँ. अच्छा. हम 3 हफ्ते रिकमेंड करते हैं, बट हम तो ये कहते हैं आप मैजिक छोड़ो ही नहीं. Why to leave it, you know? Because एक बहुत मुश्किल से आपको एक अलादीन का चिराग मिला है. Let us keep it on, you know, because it is a practice which will take you to heaven. So why to stop it? Why not to take it on? So my understanding is that, say for example, relationship है. So every day I do one chapter. 6 चैप्टर हो गया, मतलब 6 दिन हो गया.
फिर इसी को साइकिल को 3 हफ्ते तक रिपीट करो, ऐसा है क्या? हाँ, जब तक कि आपका उसमें रिजल्ट नहीं आ जाता। अच्छा अच्छा, ठीक है। उस प्रैक्टिस शुड बी ऑन जब तक, क्योंकि जितनी बार ये चैप्टर पढ़ोगे ना उतनी बार उसमें से कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। दैट इज ऑल्सो श्योर। ठीक है, थैंक यू मोनिका। हर एरिया का उन्होंने चैप्टर्स अलग अलग कर दिए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने एक बार 28 डेज की जर्नी कंप्लीट कर ली ना, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन स्पेसिफिक एरिया, चूज दैट एरिया, और उसके सारे चैप्टर्स दे दिए इन्होंने। अच्छा, उन एरियाज के अंदर आप 3 हफ्ते तो 100% उसका सॉल्यूशन निकल आए। अच्छा, ठीक है। Thank you, Monica. This is what it is. So this is money, career, your desires. Now, your desire. Yes, Shilpa. Yes. So your desires. We can go magic dust everyone. Make all your wishes come true. If you don't, if you haven't done the practice of make all your wishes come true before, make sure you complete all the steps at least once. If you are repeating this practice, you can jump to step 3. Yeah. For your very eyes, the magic wand. The magic wand practice can be used on people you know using photographs, or on the people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic. Okay. Your magic so lock. here, if you want, you know, if see you always, मुझे पता है कि आपके जिंदगी में मैजिक हुआ तो आप चाहोगे कि वो लोग भी मैजिक वाली क्लासेस में आए, बट वो कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं बिलीव करते, कौन आएगा क्या होगा, मतलब they don't believe on all these things, you know. So you can actually pray for them using magic wand, or you can put magic dust. Let them come and let them also feel the, you know, effect of magic in their lives, you know. And I highly recommend, बच्चे जो चैनल बना हुआ है प्लीज वहां पे जाके अपना फीडबैक दे दो, बिकॉज चैनल हजारों लोग पढ़ेंगे तो कम से कम वो एनरोल हो पाएंगे। वी कैन मेक डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। वर्ड बाय माउथ तो आप करोगे ही करोगे, शेयर करोगे ही करोगे, बट प्लीज मेक श्योर कि आप वहां पे जाके वीडियो बना के एक मिनट की, अगर आप वहां शूट कर सकते हो प्लीज अपलोड कर दो, या मुझे भेज दो, मैं अपलोड कर दूंगी। एक अपना फीडबैक डाल दो, बिकॉज दैट मेक्स अ डिफरेंस, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। दैट इज द ग्रेटिट्यूड that you can show to these classes. Whatever you have got, at least share it with the people so that they can also be benefit, you know, क्योंकि आपकी 2 लाइन की फीडबैक उनको इंस्पायर कर सकता है। So let us do that. Please let us do that. Okay, your magic dust. You can also make the magic dust everyone practice as part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people. बोल दे नहा रहे हैं। Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they are in bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. You can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food and drinks, your computer, your mail before you open them, your wallet, your phone before you take or make a phone call, or over any circumstance that you want to improve. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. Yeah, so magic dust कुछ भी हो सकता है। आप कल I was cooking, तो रात को मैं एक बार मन कर रहा था कोफ्ते बनाने को, हमारे फार्म हाउस से घी वगैरह आते थे बड़े बड़े, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं कोफ्ते बनाऊं। मैं अपने कोफ्ते बना रही थी, बट आई एम ओनली वेजिटेरियन इन माय हाउस, और मेरे घर में सब नॉन वेज है, तो अब वो लोग तो खाएंगे नहीं, तो मैंने कहा अच्छा मैं उनके लिए फिर नॉन वेज के कोफ्ते बना देती हूँ। तो आई वाज प्रिपेयरिंग दोस नॉन वेज के कोफ्ते। मुझे लगता था कि वो जो मटन था कुछ आई डोंट नो, इट वाज नॉट गुड, क्योंकि मैंने कभी मतलब मैं हाथ नहीं लगाती, बट मैं ऐसे पैन में बना के वो कर रही थी। मैंने कहा पता नहीं कैसे बनेंगे, मैंने बना तो दिए, उसके बाद में मैंने मैजिक टेस्ट लिया था, वो सबको बहुत टेस्टी लग रहा है। एवरीबॉडी वाज लाइक तुमने कैसे बनाया, तुमने कैसे बना दिए।
तो मैंने अपने से मूड से बना दिए एंड दे ऑल लव्ड इट. तो मुझे पता मेरी मैजिक डस्ट तो काम कर ही देगी, सबसे मैजिक मसाला है वो तो इन एनी केस. So they all loved it. Wow. कि कितना अच्छा बना रहे थे. वेरी गुड. मेरे का ये काम आ गया. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एक चीज मैं बहुत जरूरी आपसे बोलना चाहती हूँ जो कि मैंने खुद को भी रियलाइज किया. Yesterday, 2 days back, I was taking session when here session ले रही थी, तो एक फोन आ रहा था और मैं फोन काट रही हूँ और थोड़ी देर फिर आ रहा है फोन, फिर काट रही हूँ, फिर आ रहा है फोन, फिर काट रही हूँ, फिर आ रहा है फोन. अल्टीमेटली जब 2-3 बार आ गया, मैंने कहा यार इसको बंदे को समझ नहीं आ रहा कि मैं बिजी हूँ. You know, this is also a negative thought. Sometimes you are busy and the phone call is coming. अरे यार किसका फोन आ गया यार, क्यों तंग कर रहा है मेरे को. तो we should not do these things also. पता नहीं कौन सा फोन क्या मैसेज लेके आता है, you never know. तो वो मेरे भाई की बेटी का कॉल था और मैंने क्योंकि मेरे को नहीं पता था किसका नंबर है, तो मैंने कॉल बैक किया तो कह रहा है बुई मैं तो लेशा बोल रही हूँ. मैंने कहा हाँ बेटे, आपने बोला था ना जब स्कूल शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको बताने के लिए फोन किया था बस. बट मैं वैसे बात कर रही थी कि भाई आई एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि एक मैसेज अब भी इसने मैसेज क्यों भेज दिया, अब क्या प्रॉब्लम हो गई. लेट्स नॉट डू दैट. लेट्स स्टॉप डूइंग ऑल दोस थिंग्स because these are the negative vibrations which stops our magic happening in our lives, you know. So whenever you are picking the phone, you know, say thank you or sprinkle the magic dust over there. तो आप इसमें से आपको कितनी अच्छी खबरें मिलेंगी, इतने अच्छे मैजिक सुनने को मिलेंगे कि मैं बता नहीं सकती. तो let us make it a point whenever you want to open a mail, just say thank you. Today I'm going to get a best news. So create it in advance. When you create it in advance, definitely the new good things will happen in your life. So this is such a wonderful magic dust, you know. कुछ भी गड़बड़ हो रही हो तो मैजिक डस्ट दे दो तो it will be fine, you know. पता है कि अब ये काम गलती हो गई हमारे से. You sprinkle the magic dust on the people. मैं तो अपने husband पे बहुत बार करती हूँ ताकि मुझे डांट ना पड़े. So many times it happens, you know. So magic never ends. Yes. Yeah. I practice gratitude every day of my life, and it's inconceivable to me now that I could have lived days, months, and years without practicing gratitude in some way every day. Gratitude has become a part of my personality. It is in my cells, and it's a pattern in my subconscious mind. हम लोग पहले भी जी रहे थे, पहले भी चल रहा था, सब कुछ हो रहा था. जब हमने सेशन स्टार्ट किया था हम यही बोल रहे थे, when we are living, you know, we are living in a survival mode. जैसे आ रही है जिंदगी हम उसको जी रहे हैं. जब से हमें ये मैजिक का पता चला है, अब हम अपना दिन की शुरुआत वैसे ही कर सकते हैं, वैसे ही दिन बना सकते हैं जैसे हम चाहते हैं, वैसे ही रिजल्ट ला सकते हैं जैसे हम चाहते हैं. So it is make it the pattern of your life so that in your subconscious mind all the time it is thank you is happening, right? But if we get caught up in life and forget to practice gratitude, practice over a period of time, the magic will practice gratitude over a period of time, the magic will evaporate. Now remember, I use the magic. If you don't practice gratitude, वो उड़ जाएगा आपकी जिंदगी से. अभी आपने इतना अच्छा समा बनाया हुआ है अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड का, इतना सुंदर अपने आप को आपने रेस करके इतने लेवल पे लेके आए हो. प्लीज डोंट लीव इट. आपने ये छोड़ा और ये आपकी जिंदगी से गायब हुआ. वो है ना वो वाला एक पुराने जमाने का वो होता था ना, विक्रम और बेताल, तुम बोले और मैं चला. वो जाता ना वो वाला, बिल्कुल वही हो गया. आपने उसको भूले नहीं और मैं उड़ गया. तो वो दिमाग में रखो अपने. यस. I use the magic in my life as guide to let me know if I'm practicing gratitude enough or if I need to practice more. I watch my life carefully, and if I find that I am not feeling as happy, I increase my practice of gratitude. If
a few little problems start appearing in a particular area of my life, immediately I increase the magical practices of gratitude in that area. हाँ, जहाँ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए वहीं पे ग्रेटिट्यूड आप बढ़ाना शुरू कर दो. यू नो, इट इज नॉट दैट ये सिर्फ एक एरिया में काम कर रहा है, ये आपके हेल्थ में भी काम कर रहा है, आपके रिलेशनशिप में भी काम कर रहा है, आपको डे टू डे टास्क में भी काम कर रहा है, आपकी क्रिएशन में काम कर रहा है, आपके मनी पे काम, किस जगह पे काम नहीं कर रहा है. सो व्हाई नॉट टू टेक इट एज इट इज इन अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए. या I'm not blinded by false appearances anymore. Instead, I look for goodness to be grateful for in every circumstances, knowing that it's there, and then like a puff of smoke, what was unwanted magically disappears. When you keep on doing it, आपके जो भी नेगेटिव कुछ भी आ रहा होगा ना, वो अपने आप ही गायब हो जाएगा आपके रास्ते में से. Yeah. I started out giving thanks for small things, and more thankful I became, the more my bounty increased. That's because what you focus on expands. And when you focus on goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationships, even money flowed my way when I learned to be grateful, no matter what happened in my life. Oprah Winfrey. Yeah. Through the practice of gratitude, you are using an infallible law of universe. It is a gift from the universe to you, and it exists in order for you to use it and advance your life. हाँ, infallible मतलब जो फेल नहीं होता है, वो लॉ है, ये कभी फेल नहीं होता, श्योर शॉट लॉ है. आप कहीं कुछ भी आजमा के देख लो, आप अगर आप कहोगे ना आज मैंने बहुत शुक्राना कर दिया, कभी भी बहुत शुक्राना होता ही नहीं है. जितना करोगे आपको उतना मल्टीपल में वापस मिलेगा, किसी ना किसी फॉर्म में वापस मिलेगा, बट यू विल गेट इट. The universe and yeah, there is a level that you can reach with gratitude that causes unlimited abundance in your life. The way that this level of gratitude is reached is through your relationship with universe, or if you prefer spirit or God. Yeah. So this gratitude is directly connected to your universe. God के साथ connected है और अनलिमिटेड अबंडेंस मिलेगा, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो मनी में हो, चाहे वो मटेरियल्स में हो, किसी चीज में हो, इट इज इन अबंडेंस. Yes. You can tend to think of universe as separate from you, and when you think of it, look above yourself and towards the sky. While the universe most certainly is above you, it is also below you and behind you and besides you. And it is within every single thing and every single person. That means the universe is within you. Wow, this is amazing. आपके लेफ्ट पे है, आपके राइट पे है, आपके ऊपर है, आपके नीचे है, आपके आगे, आपके पीछे है. आपको याद होगा, मैंने पहले भी एक बार बताया, जब कृष्ण जी ने मक्खन खाया था तो यशोदा माता ने बोला था मुंह खोल के दिखाओ, तूने मक्खन खाया? कह रहे नहीं मैंने नहीं खाया. कह रहे खोल के दिखाओ. जब उसने मुंह खोल के दिखाया था तो यशोदा माता को उनके मुंह में पूरा यूनिवर्स नजर आ गया. सो आपके अंदर ही पूरा यूनिवर्स है. और यूनिवर्स कहाँ है? उनके मुंह में था ना. मुंह में मतलब आपकी आवाज में, आपकी डिक्लेरेशन में, आपके बोल में. और आपका बोल क्या है? ग्रैटिट्यूड. तो आपके अंदर ही पूरा यूनिवर्स है. आप कुछ भी मांगोगे, कुछ भी करोगे, आप अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो उसको देने के लिए. कोई और नहीं आएगा बाहर से आपको कुछ भी देने के लिए. सो you are the limiting factor of yourself. You are the one who stops everything for yourself. You are the one, because the moment you complain about things, the moment you are sad, the moment you criticize people, the moment you are in anger, the moment you are aggressive, you don't fall into the categories of higher vibrations. You go into the category of low vibrations, जहाँ पे कुछ भी manifest नहीं होता है. When you are at the higher level, you can manifest any damn thing, anything. You are the universe. That is the most important point. Yes. As below, so above, and as above, so below.
With this knowledge alone, you may work miracles. The Emerald Tablet. When you understand that the universe is within you and by its very nature, it is for you, wanting you to have more life, more health, more love, more beauty, and more of everything you want, then you will feel genuine gratitude of the universe for everything you receive in your life. So, and you will have universe is within you. और उसका नेचर है आपको ज्यादा लाइफ देना, आपके ज्यादा हेल्थ देना. It is for you to give you more life, more health, more love, more beauty, more of everything that you want. और इस इंस्टेंट में वो क्या कहता है, मैं कहता है तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन कुछ तुम्हें भी करना पड़ेगा. तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? You have to have a gratitude for those things. You will get everything. And you will have established a personal relationship between you and the universe. Yes. Very beautiful paragraph. Very beautiful. Very, very beautiful. The more genuine gratitude you feel toward the universe for everything you receive, the closer your relationship becomes with the universe. And that is when you can reach the level of unlimited abundance from the magic of gratitude. You will have opened your heart and mind completely to the magic of gratitude. And with it, you will touch the lives of everyone you come into contact with. You will become a friend of the universe and you will become the channel for unlimited blessings on earth. When you get up close and personal with the universe, when you आपका feel यूनिवर्स एक आपके फादर की तरह, आपके फ्रेंड की तरह, आपके हर तरह हो गया. आप उनको जितना छोड़ोगे, आप आपके साथ जितने लोग हैं वो एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो जाएगा. अपने फ्रेंड्स को यूज कर सकते हो. सी द वैल्यू ऑफ ग्रैटिट्यूड. वो उससे आप कितने लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते हो, कितना कुछ मतलब ब्लेसिंग्स लोगों की जिंदगी में ला सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो. Whatever you want, you will find it over here, right near you only. So just with gratitude. Yeah. When you feel that closeness of the universe within you, from that moment on, the world will belong to you. Yeah. And there will be nothing that you cannot be, have or do. So there will nothing that you cannot. क्या तुम हो, क्या तुम उसका कर रहे हो, और कुछ उसका जो करोगे, मतलब आप कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि उससे अलग हो. So there is nothing that you cannot be, have or do. अभी be, have or do का हम आगे और भी देखेंगे. Yes, gratitude is the answer. Gratitude is the cure for broken or difficult relationships, for lack of health or money, and for unhappiness. Gratitude eliminates fear, worry, grief, and depression, and brings happiness, clarity, patience, kindness, compassion, understanding, and peace of mind. Gratitude brings solutions to problems and the opportunities and the wherewithal to realize your dream. Gratitude is behind every success and it opens the door to new ideas and discoveries. As the great scientists Newton and Einstein proved, imagine if every scientist followed in their footsteps. Let me read it. Imagine if every scientist followed in their footsteps, the world would be propelled into new territories of understanding, growth, and advancement. Current limits would be broken and life-altering discoveries would be made in technology, physics, medicine, psychology, astronomy, and every scientific field. If gratitude, आइंस्टाइन ने भी, उन्होंने जितने भी कुछ साइंटिस्ट्स हैं वो उन्होंने कुछ भी डिस्कवरी की है. whatever they have discovered is through gratitude only. There are so many times every day Einstein used to say thank you, whatever he used to do. So if we
just see the autobiography of the people, those who are famous, those who are rich. They have this habit of doing gratitude. You know, they are so much in gratitude to things, you know. That is why they are attracting so many things. It's a live example to each one of us that is why the discoveries are made, you know. Yeah. If gratitude become a mandatory subject in school, we would see a generation of children who would advance our civilization through spectacular accomplishments and discoveries, obliterating disagreements, ending wars, and bringing peace to the world. Wow. So हमारा जो मेन मकसद है, मतलब मैंने अभी जो बच्चों की क्लासेस स्टार्ट किए, I have started the classes for the kids also. Why? Because I want to introduce gratitude in their nature. If we introduce this gratitude in the nature of the children, तो हमारे बच्चे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे. So they will be knowing the solution for each and every problem in their lives, you know. So why not to introduce this? Because the education system we need to transform. And the training program that I'm creating, I have put all these things into it, so that when teachers are teaching in the classrooms, teacher is telling once, at least 40 children are actually imbibing those things, you know. So let us include this into, हम अपने बच्चों को भी क्यों ना सिखाएं ये लोग चीजें. So when we will teach these things to our children, we will see where our nation will go, you know. Yes. Nations who will lead the world in future are the ones whose leader and people are the most graceful. The gratitude of nations whose leaders and people are the most grateful. The gratitude of a nation. The gratitude of a nation's people would cause their country to thrive and become rich, and cause illnesses and diseases to drastically drop, businesses and production to escalate, and happiness and peace to sweep the nation. Poverty would disappear and there would not be a single person in hunger, because the grateful nation could never allow it to exist. The more people who discover gratitude's magical power, and faster it will sweep the world and cause a gratitude revolution. So we really want to create a gratitude revolution. So I would highly recommend, please, it's a request to all of you, go to the channel को subscribe करो, उसमें अपना share करो, please, because I want more people to join and more people to know the value of gratitude in our lives. So at least they can resolve their own problems. Yes. Take the magic with you. Take the magic with you. Take gratitude with you wherever you go. Saturate the magic of gratitude into your passions, encounters, action, and life situations to make all your dreams come true. In the future, if life presents you with a challenging situation that you think you have no control over, and you are at a loss as to what to do, instead of worry or fear, turn the magic of gratitude and be grateful for everything else in your life. When you deliberately thank the goodness in your life, the circumstances around the challenging situation will magically change. Yeah, when you deliberately thank the goodness, जब आप मतलब आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ 1 रुपया है, 1 रुपए के लिए भी इतना ग्रेटिट्यूड करो. डोंट वरी अबाउट कहाँ से आएगा, कब आएगा. जो है, बहुत सिंपल सा फंडा है इसका, जो मेरे को समझ आया है, जो है आपको उसको ग्रेटिट्यूड करते जाना है. बाकी रेस्ट you have to create yourself what you want. जो है, whether it is 1 rupee, whether it is 50 paisa, whether it is 50 rupees, whether it is 100 rupees or 500 rupees, जो है उसका शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है. Yes. We showed him, that is men, the way, whether he be grateful or ungrateful, rest on his will. Yeah. तो ये यूनिवर्स ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ा डायलॉग छोड़ा है. यूनिवर्स ने आपको बोल रहा है, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है, मैंने आपको बता दिया ये रास्ता है आपके जन्नत का. अब आप ग्रेटफुल होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो,
उस रास्ते पे चलना चाहते हो, नहीं चलना चाहते हो, the choice is yours. Very nice. Yeah. Say the magic words thank you. Say them out loud. Shout them from the rooftops. Whisper them to yourself. Say them in your mind or feel them in your heart. But wherever you go from this day forward, take gratitude and its magical power with you. Have a magical life filled with abundance and happiness. The answer is on your lips. It is inside your heart and it is ready and waiting for you to bring forth the magic. Rhonda Byrne. Wow. Can we clap for her? So let us show the gratitude to this lady. Yes, she is amazing. Amazing, Wow, amazing. wow, wow, wow. She is the one who has created this. Imagine. So you can unmute yourself if Beautiful. you want to say, let us, let us say thank you, thank you, thank you so much, Rhonda. Thank you so much. So Thank you, thank you, amazing. thank you so much, Rhonda. Absolutely. Yes. Anybody would like to share anything? Chat. Amazing. Lots of gratitude to her. Happy birthday. Okay. Anybody would like to share anything? Let me unmute you, Luko. Mute, unmute. Allow. Yes, Rupali. Yes, ma'am. Yes. End of it. Look, जब तक नहीं पता था, मतलब I don't know what exactly it was, but magic is absolutely different. One way it's so simple. Yeah. Just one word with a basic meaning, gratitude for whatever you have. It's going to change the world around you. Absolutely. But it is actually so deep. Ma'am, somewhere it is difficult. Yeah. Yeah. But then also, practice is so beautiful. Actually you have the Even the journey is very beautiful. It's not about the end where we are going to land up, but yes, the journey has been so beautiful. Every day, new feelings, new excitement. We are knowing ourselves better. Yeah. It's not about anybody else. It's end of the day, it's about yourself. Absolutely. It's about ourselves only. So it's up to us how we create our life now. Yes. We know the tools, we know the practices, how we are going to do it, how we are going to implement it. That is on us, whatever you want to do. Yes, Sujata, you can unmute yourself and you can say what you want to say. And I really, really, really thank each one of you for participating in the session and creating this journey so beautiful. अब ये क्यों नहीं unmute हो रहा? So it is very beautiful concept of conscious decision. It's your will whether you want to live a beautiful life or you have to follow a crowd or you have to be a leader to choose and give a good life to people. See, रास्ता दिखा दिया गया है. Now it's your wish whether to go ahead or not. So yes, it's your wish. Yes. या तो तुम बेचारी बन के घर में बैठ जाओ और accept the way life is coming to you, or stand up like a magician and create and change the situations that is coming to you, or create your day. और एक इसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल, एक बहुत हमने कुछ कहीं मिस तो नहीं किया. There is a beautiful line. I think so. I have missed it. I really want to share that because it has compared with the Brahma, Vishnu, and Mahesh also. It's beautiful that line. I think so. I have missed it. There was it. कि आप he create. See, this universe is of 3 people, जो हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं ना हम लोग. So this book says being, having, and doing.
and this book वो is लास्ट पेज पे था, लास्ट पेज पे था, लास्ट पेज पे था, तो I हाँ ये इसके पहले वाले, okay, let me check. लास्ट का पैराग्राफ में लास्ट की लाइन है वो, इसके पहले एक और शायद से। That is beautiful. So they have connected it with the Brahma, Vishnu and Mahesh. मतलब रोंडा ने ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ भी कंपैरिजन कर दिया that you are the part of being, you are the part of having, you are the part of doing. ब्रह्मा जी क्या है? ब्रह्मा जी हैं creator. So you are a creator of your life, creator of every moment, creator of everything. You can create it. And second is doing, practicing. Sorry, having means practicing the magical practices that you have, जो कि किसका काम है? विष्णु जी का काम है। जो हमारे डे टू डे चीजें जो होती है विष्णु जी देखते हैं। और थर्ड इज doing is who's that is महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शिवा, who is a destroyer का मतलब है आपका एक काम खत्म होता है, एक चीज टास्क खत्म होता है, मतलब एक चीज शुरू होती है तो एक खत्म भी होता है ना, सो ही इज द कंप्लीट। तो ये तीन चीजें यूनिवर्स के साथ जोड़ के रखी है। इसमें देखो जरा कहाँ है वो, या just missed it, I think so. आई रिमेम्बर एक पेज पे है, मैंने पढ़ा है, ये आगे ही है शायद से, इसके आगे है। Whisper, happiness, heart, वो है Thank you so much, ma'am. It was amazing journey on these 28 days. Yes. And it has been. वो वैसे I used to practice earlier, तो फिर मिस आउट हो गया था। फिर आपने दोबारा से जो है, मैंने आपको बुक भेजी थी ना, मेरे पास बहुत पहले से है वो। मेरे पास तीनों बुक है, द पावर, द सीक्रेट, द मैजिक, और ये 4 चीजें हैं, इसकी 4 बुक हैं। तो अभी हम लोगों ने दोबारा से करना स्टार्ट किया, तो मैंने पूरा प्रैक्टिस किया अच्छे से, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब हम बहुत जल्दी पावर भी करेंगे, द पावर वाली बुक भी करेंगे। यस, 447 पे है मोनिका जी। 447 कहाँ है ये? हाँ, पेज नंबर 447। यहाँ पे लिखने से आ जाएगा। कहाँ लिखूं मैं 447? ये जो जहाँ पे एरो है ना ऊपर देखो, यहाँ पे टाइप करोगे ना तो 447 टाइप भी जाता है। ये हाँ, इसके लेफ्ट में हाँ नंबर लिखे ना, जहाँ 451 पे है। हाँ, तो यहाँ थोड़े से आगे 451 से 2-3 पेज आगे यहाँ पे 447 टाइप कर दोगे तो भी आ जाएगा। देखा आ गया ना मैजिकल चीज। ये देखिए लास्ट की लाइन है, ये हाँ ये वाला, ये इधर लास्ट की लाइन। हाँ, देयर विल बी नथिंग दैट यू कैन नॉट बी, हैव और डू। हाँ ये तो हमने पढ़ा था, बट एक है बीइंग, हैविंग एंड डूइंग, वो भी है, एक 3 वो वर्ड्स भी है, ये तो हमने पढ़ा था, ये तो आई डू रिमेम्बर दिस। सो बेसिकली शी हैज कनेक्टेड द यूनिवर्स हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश से बनाए जाते हैं। सो क्रिएटर, तो आप पूरे ब्रह्मांड हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो और आप ही शिवा हो। You are the creator of your own destiny. Yes, you are the creator of your own destiny. Great. You have all the universe in you. Universe आपके पास है, आप ही universe in any case. Yes. So anybody would like to say or ask anything? Yes, thank you, Monica. It is such a wonderful practice. मतलब when you connect to the universe और कैसे आप positivity maintain करते हैं, उसमें positivity में रहते हैं, in that vibration, that feeling is very wonderful. Thank you. Thank you. And thank you everyone for sharing and participating. I expect each one of you to please give the feedback on the channel. Yeah. Yes. So that we can post it over there. वहाँ करोगे तो ज़्यादा अच्छा है. And please invite more and more people. मैं आज link share करूँगी उनके साथ. Please उनको join कराओ. And the new batch is starting on Monday. But हम कल भी मिल रहे हैं. कल हम on billionaire mindset पे मिल रहे हैं. If you want to be part of it, you are most welcome.
वो तो बहुत जरूरी है। वेटिंग वो वही उसके लिए वेट कर रहे हैं हम लोग, उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, so I thank Lalita ji, Shilpa, Ashu is also there. Thank you, thank you, thank you. Okay, thank you, Di. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Di. Thank you, everyone. Thank you. Neetu, Rupali, Thank you, Shweta, ma'am. and Thank you, Darshana. ma'am. Thank you, ma'am. So much. Thank you, Thank thank you you, so thank much you, for thank you, being thank here. you, thank 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 you. Thank you, Monica. Thank you. Thank you. thank God you. bless you. See you again Thank soon. you, Monica ji. Thank you, from tomorrow. everyone. Yes. हम लोग एक once in a week कनेक्ट रख सकते हैं क्या मैजिक का, कि कैसे चल रही है प्रैक्टिस या हाँ, how अच्छा things आइडिया are है। going. बिल्कुल कर Yeah. सकते हैं. When we are there, we can The do that. Friday या Saturday evening same time. हाँ, So better option, not Friday. not Friday. Yeah. Tuesday. whenever everyone is available. Yeah, we can. Yeah, I think we can. Yes. I think we can Yes, Ashu. stay in a group and you सैटरडे know. को तो हम सैटरडे को तो हम मॉर्निंग में भी कर सकते हैं कभी-कभी, मतलब कि डिसाइड कर लेते हाँ, Saturday morning also is fine. Yeah. So Yeah. what do you suggest for the new batch? Is this the time fine or I should change the time? यही टाइम सही है। अब कभी ना कभी The time is perfect. This time is perfect actually. किसी का तो मिस This is a perfect यहाँ time. थोड़ा concentration भी रहता है. हाँ. 7 is perfect time. हाँ. ठीक है. Thank you, Ashu, for joining. Ashu. Thank you, Didi. Yeah, I got 10 minutes left, so I thought better I go and join and say bye to everyone. Today was a long chapter, but it was a beautiful chapter in any case. Amazing chapter. Yeah. Yeah, this is but yeah, the thing is we should keep practicing. That's the main thing. We should keep practicing. Very. Yeah. And more than practicing, everyone should share their experience. It inspires others also. That is what I'm saying. They should keep, वो पता है मैजिक अपने में अगर रख लोगे तो क्या फायदा उसका? Actual gratitude तो वही है when you share the things with the people. आपकी छोटी छोटी शेयरिंग भी दूसरे के लिए कितनी इंस्पायरिंग होगी. Yes. Even anybody from the group can also start the magical thing. That I told Sangeeta शायद शुरू करेगी. Sangeeta has told me. I told. Yeah. So that would be very good. Like that will multiply, I think, and we can join. ये करेगी. ये सुजाता करेगी. दी मेरी मैजिक बुक आ गई. मुबारक 10th की बोली थी डिलीवरी, वो 8th को आ गई. Wonderful. When you get it ना, ये तो such a wonderful feeling यार. वो मतलब वो देख मजा आता है. देख के प्यार करते रहो उसको. मेरे पास भी है. मेरे पास हिंदी वाली मैंने दिखाई थी ना. हाँ. Great. So Dr. JP, you are joining from Monday? Yes, certainly I'll keep joining. What is your experience? I just want to know because you joined 3 days back only. But for Monica, I can do magic in 3 days. Okay, thank you. इन्होंने मैजिकल मोनिका तो वैसे बता दिया. आज अनमोल नहीं आया. अनमोल ने मना किया. उसका कुछ गेट टुगेदर था तो he called me up. He said कि मैं नहीं आऊंगा. मैंने कहा तुम तो हमारे ग्रुप की रौनक हो. But I was thinking, Monica ji, is there anyone in this our group who speaks Telugu? Anybody can start some group like this in Telugu language because I've got so many people there. तो आप ही शुरू कर दो. तेलुगु आप ही को आती होगी. Yeah, but where? You can, Dr. JP, you do the session. You start the session on Monday. आप Wednesday से start कर दो. आप एक तरफ इधर से सीखो, अगले दिन से वहाँ शुरू कर दो. क्या problem है? और अपनी भाषा में पढ़ते. Yeah, I'm also from Telugu. I can hear you. Oh, Tejaswini, you can start the batch. That is what Dr. JP is saying. I'm suggesting actually this will be very touching for ladies. Actually, what I've understood. Yeah. Continue sharing and spreading. Yeah. This is to do more with emotions. Men are little bit cold. So I don't agree. So I feel anyone who in our group who is good, like Sunanda ji, I heard that she is from Telangana and all that she was here in Yeah, I'm from Telangana, sir, and I mean I've been born and brought up in Karnataka. I'm more familiar with Kannada than Telugu. I know Telugu. You know Telugu, you can start. Kannada barutte.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಮ್ಮ, ಹಂಗಾಗಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಇಬ್ರು. यही शुरू हो गए दोनों. Please translate. I really want someone. really appreciate if any of you are willing to start their own batches. Please go ahead. पूरी सपोर्ट मिलेगी मेरी. कुछ करना हो प्लीज गो ahead. और मंडे से जो मेरा बैच स्टार्ट है, प्लीज गेट योर फ्रेंड्स एंड बिल्कुल हिंदी में पढ़ूंगी मैं. क्या कह रही है सुजाता? हिंदी इंग्लिश ठीक होता है. हिंदी इंग्लिश नहीं, मतलब नॉर्मल बहुत से लोगों को नहीं आती ना इंग्लिश, तो हाँ, बिल्कुल. लोगों को हिंदी की बुक है मेरे पास, उसके शब्द भी बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं. और हाँ, वो शब्द बड़े टिपिकल से है, मेरे को पता है. जादुई और जादुई दर्पण, कृतज्ञ. हाँ, पूरी अपनी आत्मा से, श्रद्धा से. मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश इज गुड बुक टू रीड. वो वी आर एक्वेंटेड, मतलब वो समझ में भी आता है. हिंदी अपन ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर दूसरे को कैसे समझाएंगे? What is your experience? मैम एक्सट्रीमली गुड. ग्रेट. पता नहीं क्यों ये क्या मैजिक हुआ मेरे साथ 3 दिनों में. आज तक इतने सालों से नहीं हो रहा था. कल रात को मैंने 2008 में अपना करियर शुरू किया था एज अ टीचर. 2006 में किया था, पर 2008 में एज अ फॉर्मल स्कूल में ज्वाइन किया था. 2008 में जिस बैच में मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया था, उन पेरेंट्स के पास मेरा नंबर अभी तक सेव्ड है. ओके. उसकी मदर ने मुझे कल रात को मैसेज करा, हाय मैम. आई वाज शॉक्ड. मैंने कहा ये कौन है? मतलब मैंने अपना फोन 6 बार चेंज कर लिया, नंबर डिलीट हो गए. मैंने बहुत ध्यान से देखा तो हाँ जी, वो वृति की मदर है. मैंने कहा हाय, हु इज दिस? स्वाति मैम, वृति की मदर हूँ. मैंने कहा ओके, थैंक यू. आपने मेरा नंबर सेव किया हुआ है? कहती यस मैम, इट्स स्टिल विद अस. मैंने कहा थैंक यू. कहती मैम एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वृति आपको आज तक याद रखती है, तो वृति का बर्थडे है 14 जुलाई को, एक छोटी सी वीडियो उसके लिए बना के भेज दो. वो आज तक अपनी स्वाति मैम को कभी नहीं भूली, क्योंकि आपने उसको एक बेसिक एजुकेशन, नर्सरी, केजी, क्लास 1 तक, तो वो चीज कभी नहीं भूली. मैंने कहा ठीक है. मैंने इंस्टेंटली वीडियो बनाई, आई लव यू बच्चा, हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू. फिर उस बच्चे के साथ साथ उसकी बहन को भी मैंने 5 साल के बाद पढ़ाया था उसी स्कूल में. मतलब मैं 8 साल की जगह मैंने जो काम किया था, तो उसी बच्चे की सिस्टर को, रियल सिस्टर ध्वनि, उसको भी मैंने ही पढ़ाया. मतलब उसकी मदर को था, अंदर से दिल से था कि नेक्स्ट मेरी जो दूसरी बच्चा है ना, उसको भी स्वाति मैम ही पढ़ाए. तो कैसे भगवान की कृपा होती है, या कैसे आपके मन में जो होता है. Magic of gratitude. She has come from last 3 days से आ रही है ये, मतलब परसों 4 दिन पहले मेरे से बात हुई थी. Started coming on the session and she's great. थैंकफुल लगा भगवान को. मुझे लगा कि यार थैंक यू, मतलब ये मैं करके देखो. हाँ, मैंने जिस बच्चे को बहुत ज्यादा उम्र रह गया ना, उनका थैंक यू. Great. Thank you so much. Thankful. Please, all of you, give your feedback on the channel. Bring people over here. मंडे से कम हमारे पास 30 लोग, क्योंकि मैं 30 से ज्यादा सोच भी नहीं सकती कि 30 हो, ताकि जो हो उनकी जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट हो. दैट इज माय कमिटमेंट. Whoever is there in the group, everybody should get magic in their lives. Sure, I'll try my best to get something. Definitely. Thank you. Sure. Thank you Monica ji, and I'm happy कि मैं पूरे 28 days full attendance रही है. And it's a big gift for एक हमारी एक full attendance record भी बना लो. Congratulations. So I'm feeling so happy कि 100% committed, और I could see the results in my life, wonderful results. So thank you so much Monica ji and everyone. The first day when you spoke, I still remember those words and lines, and वो डरी सी आवाज, and you were not even, वो पूरा लाइन भी नहीं बोल पा रही. नहीं, मैंने बस शेयर करना ही नहीं चाह रही थी. और today just see, imagine. I'm so happy for you, Shilpa. I'm so happy. I'm so glad that so much difference you have created in your life. Thank you so much. Many more ways to go abhi. I want to say something. इस जैसे कि 28 days का हुआ था, तो मेरा 100% अटेंडेंस तो नहीं था for sure. इनफैक्ट मेरा 50 से 60% अटेंडेंस रहा होगा.
लेकिन मैंने जितने भी दिन अटेंड किया है मतलब कि तो मेरा एनर्जी का वाइब्रेशन अलग ही हो जाता है बिल्कुल, और बहुत मजा आता है। और मैं तो जब भी आती हूँ मैं खुद ही पढ़ने लग जाती हूँ। और दूसरी चीज, मैंने अभी मेरा पिछला जो 1 महीना गया है ना, उसमें मेरे ट्रेड्स जो है सारे के सारे इतने ज्यादा जबरदस्त गए हैं। क्या बात है। Oh my God! ये पैसे मल्टीप्लाई कर रही है, ये मल्टीप्लाई कर रही है, मैग्नेटाइज करती जा रही है पैसे ये। Thank you, Sujata. Thank you. Thank you so much. Thank you, Shweta, ma'am. would you like to say something? You want to share something, Shweta? Yeah, Monica Ji, thank you so much. And today's session was really great. And I'm feeling bad for not attending the few sessions. Earlier, I used to attend them, but somehow I missed it because my school started and I got busy in that. But one thing I would like to share that I'm fortunate enough to start with the session, although I was not able to continue it. But yes, I'm really grateful that I attended the beginning of the session, and it brought really great change in my life. Wow. I became more grateful. And as I told you that I started praying in the evening, the Sandhya part, and I'm continuing doing that with my son. And always sit over there and pay gratitude to God for each and everything, whatever is coming to me. One thing which I would like to share here was I was living in my past earlier. Actually, I have done HR, human resources, so I always wanted to get back to my previous things, to get back into that same profile. And right now I'm into teaching. So I always wanted to go back. But somehow, after listening to you, I really felt like, why not to thank the present, not to live in the past. Yes. And you will not imagine that actually magic happened. I started looking more bright in the front of my kids whenever I take a class, and I give my 100% to them. If I'm taking 1 hour class, I'm giving 100% to them. And 2 days back, principal and our coordinator came in the class to check how the class is going on. And the feedback which was given to me was amazing. Wow. And one thing which is said to me was, Shweta, you are looking very pretty. On the screen, you are looking very pretty. Why there was so much of glow on your face? So I said that, ma'am, I was very happy while taking that class. So she said, that is good. I mean, one should be happy. Whatever you are teaching, even if you are teaching to small kids or you are teaching the higher classes, it doesn't matter. It doesn't You matter. must feel happy from inside. Absolutely. So I was happy, and now I am living in my present, and I'm happy with it. Wow. Congratulations for winning your life, you know. Thank you so much. Congratulations. Celebrations. Best part. That is the Thank you best. so much. So I think if somebody go for gratitude, one will start feeling happy, and that glow will show in your face. Yes. And glow is showing in each and every person's face right now. I can see that, you know. मेरे को पता है जब सब आए थे तो शेयर भी नहीं करते थे, बोलती रहती थी दबी दबी से आवाज में शिल्पा को बोल के बोलना शुरू किया. आज देखो, माय गॉड, आई एम सो हैप्पी. मतलब जो मैं ये नहीं बता सकती कि आप लोगों ने ये मेरा सपना पूरा किया है, which I really wanted when I was in Landmark. I want to create difference in people's life. This is the platform you're giving me. I'm so blessed. Thank you so much. Thank you, ma'am. You're so awesome. We are grateful to you. Thank you, Monica ji. Thank you. Amazing. Thank you, Monica. आज तो मतलब वो ग्रैटिट्यूड करते करते मुझे एक्चुअली रोना ही आ गया कि आई कुड फील कि हाँ, आई हैव अचीव्ड इट, एंड वो टीयर्स वर आउट ऑफ माय आईज. मैंने कहा वाओ, आई मीन आई हैव स्टार्टेड फीलिंग इट सो डीप. That is true gratitude that is shown, you know. And you imagine everybody or each one of us can create what we want to create. The tip, they are on our tips, you know. Practices are with us, you know. It's up to us how to go ahead about it. It's amazing. Let us keep miracles happening in our life, you know. Yes, let's report victories. Okay. Can you share something? Yes, ma'am. Vikram, Hi, Monica. I'm asking Vikram to share if he wants to share. He couldn't attend for last 2 days.
बट मैं आपको ये बताऊं, मेरी डायरी में रोज आप लोगों के नाम, आप लोग सबके नाम मेरी डायरी में रोज होते हैं कि I really want to listen from these people. Magic should happen on these people. That is Monica, Pritish wants to say something. Pritish. Come. He just ran away. So sorry. Hello, Veer. Veer, come. Veer, bete. He is my Mama Ji's daughter, actually. Shweta. Camera he's hiding behind the chair. He was just saying that, Mama, you spoke very well. I also want to say thank you. Monica, come speak it. So उनको बोलो कैमरे में आए. So sweet. Very nice. Good. Thank you, everyone. बहुत इमोशनल डे है आज वैसे. Thank you. मेरा बच्चा वीर. Thank you so much. Bless you. So sweet. Thank you, Shweta. Thank you so much. Thank you, ma'am. Right. Take care, all of you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye, everyone. Bye. Thank you, ma'am.